Good morning students, welcome to Commerce Gyanpit Odisha. Today we'll start with section number 17, fraud. है ना? तो fraud रो meaning कौन? Fraud रो meaning कौन? Fraud. है ना? The fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract. तो section number 17 हिसाब रे fraud रो meaning कौन? से कहूची includes any of the following act. से जेतिकी भी acts mention करिछि सेडी से भितर कोडा भी हे पारिबो. का सहित हे परियो ना कमिटेड बाय के करियर अछि कमिटेड माने कोन एक्टेड बाय आ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट माने दीडा पार्टीज माने कॉन्ट्रैक्ट रे दीडा पार्टीज थिबे हला से पार्टी माने को भितर जदी के भी फॉलोइंग एक्ट्स करचंदी तो सेडा कोन काउंट होबो सेक्शन नंबर 17 अंडर ए फ्रॉड काउंट होबो और विथ हिज connivance or by his agent or with the intent to deceive another party that or his agent or to induce him to enter into the contract माने ultimately से कहूची party to the contract किंबा तार कोन हेल्पर्स जे भी अछंदी तार एजेंट भी हे पारे तार फ्रेंड भी हे पारे तार माने जे भी से अपॉइंट करची कॉन्ट्रैक्ट जिंस ओडा को बुझिया पई ताकू भी जदी किछि मिस रिप्रेजेंट करि के हमें फ्रॉड भीतर को आनचू इंड्यूस करचू माने कोन ताकू जोर जबरदस्ती करचू माने कन्विंस करै दोचू से जिंसोडा विश्वास करिया पई तो ए भितर कोन कोन आसी हमरो the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true, the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact, a promise made without any intention of performing it, any other act fitted to deceive, any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent. तो से केति कि जिंसडा हमर कहला एडी 5 पॉइंट्स कहला अल्टीमेटली हमर कोन 5 पॉइंट्स गुडा को बेसिक किछि माने माने रखुनी सब जाको अल्टीमेटली सेम मीनिंग आको दबा हमको फर्स्ट कोन कहूची सजेशन एज अ फैक्ट दैट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू माने से जानि छी सेपड लोक पई कि आम पई जहा पई भी हो से जिंसडा ट्रू नै बट से कोन माने को हिसाब रे से कहूची एदर से गुडा सजेशन हिसाब रे कहि दोची नाले फैक्ट हिसाब रे कहि दोची सजेशन हिसाब रे कहि दोची नाले कोन फैक्ट हिसाब रे कहि दोची बट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू हला का पे भी सेडा केबे भी सत्य नाही बट से कोन गुडे सजेशन हिसाब रे सेडा हमु विश्वास करि दोची फर्स्ट पॉइंट सेकंड थिंग इज एक्टिव कंसीलमेंट माने हाइडिंग एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट by one having knowledge or belief of the fact माने कोन गोटे फैक्ट अछि गोटे जिंसडी अछि से जिंसो कोन कर से जानि सुनि गिरी हाइड कर दोछ हला जानि सुनि के हाइड कर दोछ माने कोन हे पारिया मनर गोटे कॉन्ट्रैक्ट अछि से कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर हेले रेवेन्यू मिलेबो हमको 20000 30000 बट से भीतर हमको लीगल लिटिगेशन उडा भी अछि सेडा ताको कया दरकार थिला बट से कोन कहउची सेडा से हाइड कर दोछ ही इज एक्टिवली कंसीलिंग दोस फैक्ट्स actively concealing those facts तो से जिंसडे भी कोन फ्रॉड आगा कया हमें जदी सेडा कहि थांदे ता पर भी हम डिसीजन नै पार थांदो वी आर कैपेबल ऑफ मेकिंग अ डिसीजन आफ्टरवर्ड्स आल्सो देन ओनली सेडा कोन भलो काउंट हेई थांदा बट से एक्टिवली जानि सुनि कि से जिंसडा को हाइड करछि ना नै सो दिस इज आल्सो फ्रॉड नेक्स्ट थिंग इज अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट प्रॉमिस से करि दोछि कोन तमो जदी कोन प्रॉब्लम हेले आई विल बी देयर फॉर यू मो तमरो लीगल माने ऑब्लिगेशन उडा को बुझिबी बट तार इंटेंशन बिल्कुल भी नाही से जिंस भीतर को ये करिया पे क्लियर एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव हला ताको चीट करिया पे कोन से भी जिंस जदी से करछि डिसीव माने कोन चीट करिया पे जदी से किछि भी एक्टिविटी कैरी आउट करूछि देन एनी सच एक्ट और omission as the law specially declares to be fraudulent जदि लॉ कोन भी माने डायरेक्टली कहि दोछि कि ए जिंस उडा को सब हम पे fraudulent हला से कहूछि कोन fraudulent एक्ट अंडर कोन आसीबो पैसा नेगिरी काम न करिबार किंबा कोन पैसा नेला पर रिप्लाई न देबार पेपर उडा नेगी रखि दबार पैसा माने दबार नै ए सब जिंस कोन एक्ट हमको fraudulent कहूछि तो कोन से भी जिंस जदि एक्ट डायरेक्टली मना करछि दोस थिंग्स विल बी काउंटेड टू बी फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 नॉले से कोन कहूछि गुटे सजेशन किंबा फैक्ट देखो एडी लिखि दियो डायरेक्टली ओन वर्ड्स रे समस्त को माने जे भी लेक्चर देखो चंदी समस्त को रिक्वेस्ट करछि कोन ना ए जिंस संगे संगे सेडी आगे लिखि देबो बिकॉज़ राइटिंग इन सिंपलर वर्ड्स विल मेक यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट क्लियरली हला रजिस्टर हे जिवो संगे संगे सेडा हले से कोन जिंस कहउछि हमको 5 पॉइंट्स कहउछि ना नै 5 पॉइंट्स कहउछि लास्ट पॉइंट टू स्टार्ट करिया एनी एक्ट और ओमिशन माने कोन जानी सुनी कि से जिंसडा को ओमिट कर दबार न कहिबार एनी सच एक्ट और ओमिशन declared to be fraudulent
by law. law directly कहि दउची ए जिंसडा fraudulently कहिले से जिंसडा को हम fraud मानिबा. then आछि acts done in order to cheat or deceive. law language कोन deceive. acts done in order to cheat or deceive. promise made without any intention to actively carry out it. promise कर दोची मात्र तार किछि भी इंटेंशन नै से जिंसडा कैरी आउट करिया पे. क्लियर. देन से कोन कोची active concealment, active hiding or concealment of fact having knowledge or belief कारजे of the fact. माने से लोक जदि जानिनी से निजे जानिनी देन तार किछि इश्यू नै न कहिले भी किछि इश्यू नै. बट जदि से लोकर नॉलेज अछि से विषय तार बिलीफ सिस्टम भी अछि दीडा जाको जिंस थाई कि रियले से जदि से लोकड़ा कोन कर से जिंसडा को ओमिट कर दोची किबा एक्टिवली हाइड कर दोची देन से जिंसडा कोन हमें काउंट करिया कोन काउंट करिया फ्रॉड काउंट करिया. क्लियर. हेलो. देन से कौन से देखो mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them it is the duty of the person to keep silence or unless his silence is in itself equivalent to speech. देखो एटा very important जानि थिबो जे भी माने लाइक टिके पास्ट क्वेश्चंस भी देखि थिबो ए जो पर्टिकुलर प्रोविजन ता अछि ताको धरि कि हमरो बारंबार क्वेश्चन पचरे हिछि हैला. से कहउछि कोन mere silence माने कोन just staying silent as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract. हैला गोटे पर्सन एंटर हेबा भितरे हैला तार विलिंगनेस ता कन्विंस करला आलिया माने तार विलिंगनेस ऊपर इफेक्ट पकेला आलिया जदि हमर साइलेंस ता रहउछि देन कोन हबो is not fraud हैला unless the circumstances of the case are such that regard being had to them it is the duty of the person to keep silence or unless his silence is itself equivalent to speech. माने से कहउछि कोन अल्टीमेटली गुट्टा का सेंस से बुझौछि जदि से साइलेंस ता हमर डिसीजन मेकिंग को बहुत क्रूशियल देन सेटा हमें फ्रॉड कहि परिबा. नहले कोन जदि से साइलेंट रहउछि किछि रिगार्ड नै सेठी गुटे वर्ड ता कहै देखो रिगार्ड बीइंग हैड टू देम माने तार साइलेंस को जदि बेसी इंपोर्टेंस अछि से पूरा जिंस रे माने से गुटे मेन पर्सन जे की से पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऊपर डिपेंड करूची तार जहां भी कथा आता ता पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऊपर डिपेंड करची देन कोन तार साइलेंस ता बेसी किछि इफेक्ट पकेबो एंड वी कैन काउंट इट एज फ्रॉड. बट तार सेमति किछि इफेक्ट नै हला से साइलेंट रहिले भी कॉन्ट्रैक्ट से तो किछि फरक पड़नी देन हम सेटा फ्रॉड कहिबो हला सिंपलर टर्म्स रे इमति बुझिबो. तापर देखो से कोन कहछि डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड से पछछ. At times, one of the parties to a contract be silent to some of the facts relating to the subject matter of the contract. The matter in which silence is maintained by party may be material fact. Does this amount to passive fraud under the Indian contract or not depends upon various factors. Ultimately, mo तमो से statement ता कहली कि जदि से फरक पड़ची contract को then only सेटा हमें fraud count करिवा. तो Indian Contract Act कोन कहउची ना first thing होची underline करो relating to the subject matter of the contract. जदि तार साइलेंस सब्जेक्ट मैटर को रिलेटेड हेगिरी अछि देन ओनली हमें कोन करिया देन ओनली सेटा फ्रॉड ना नै काउंट करिया पे हमें भाबिबा. देन द मैटर ऑन व्हिच साइलेंस इज मेंटेन्ड बाय अ पार्टी मे बी अ मटेरियल फैक्ट मे बी सेटा मटेरियल हे पारे. डज दिस अमाउंट टू पैसिव फ्रॉड माने कोन पार्शियली फ्रॉड ले हमें कहि परिबा कि जदि पूरा फ्रॉड नै तो पार्शियली फ्रॉड कहि परिबा कि यस और नो सेटा डिपेंड करछि वेरियस फैक्टर्स पर. बहुत किछि फैक्टर्स हमर अछि जहा को धरि कि कोन सेटा फ्रॉड काउंट हे पारे. आमे गुटे दिडा फैक्टर को धरि कि फ्रॉड कहि परिबानी. अल्टीमेटली से गुटे जिंस कहउछि कोन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जदि इंपोर्टेंट जिंस किबा सब्जेक्ट मैटर को धरि कि जदि से साइलेंट रहि जाउछि एंड मैचिंग ऑल द अदर फैक्टर्स जदि से साइलेंट रहउछि देन ओनली आमे सेटा कोन फ्रॉड काउंट करबो. क्लियर.
explanation रे से कौन कहूची mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of case are such that having regard to them it is a duty of the person keeping silence to speak or unless silence itself is equivalent to speech. He is repeating the same thing here. Explanation रे जहाँ आइथिला again से repeat करछ. Thus we can say that there is an exception to the rule that mere silence does not amount to silence. These two exceptions are provided in explanation to 17 है ना से कौन कहूची where there is a duty to speak and where silence is equivalent to speak ए दिरा होची कौन exceptions आम माने thus we can say that there is an exception to the rule that mere silence does not amount to silence माने does not amount to silence ने fraud एडी बावड़ी होची से पूरा हैला एडी लेखा apart from these two cases the mere silence is generally not counted as fraud. Clear? Not counted as fraud. ए दिडा cases रे आगा हम सेटा fraud count करि परिबे. Clear? However, in the following type of cases, silence amounts to fraud as held by the courts in various cases. हैला से हाफ कहची ए भितरे ए दिडा केस कहला ए दिडा केस भितरे भी से कहची कोन कोर्ट तुमको अलगा दिडा जिंस देछि कोर्ट कोन देछि as per courts decisions को जिंस हेछि हमर सेडा में देखिए when there is a change in circumstances when there is change in situations or circumstances then when there is half truth कथा सतटा मु जाना अछि ऑलरेडी आ बाकी सतटा जदि जानिबो चाहूछु एंड से पर्सन रो जहा किछ भी माने वर्ड्स अछि सेडा बहुत क्रुशियल से सतटा जानिबा पई से सतटा कंफर्म करिया पई देन से जिंस पई कोन कोर्ट टिके सीरियस अछि तो कोर्ट कोन कहूची ना when there is a change in the circumstances a representation may be true when made but with the passage of time or changed circumstances it may become false accordingly this must be communicated to the other party otherwise it amounts to fraud माने देखो जदि नॉर्मली गोटे कॉन्ट्रैक्ट जिमती चलिया कथा चलथु हैला ध्यान से सुनो कंफ्यूज हबो जिमती चलिया कथा सिमती चलथिला से कॉन्ट्रैक्ट बट सडनली कोन सर्कमस्टेंसेस जेतु चेंज हैला लॉ जेतु चेंज हैला से लोक माने जे भी इन्वॉल्व हेगे अछंदी सेमन भीतर एक्टिव कम्युनिकेशन ता दरकार थिला कि किछि किछि टर्म्स चेंज हो चले गयो जदि से किछि किछि टर्म्स जहां भी चेंज होची से जिंस पई गुटे जण जानि गिरी आ जण को कम्युनिकेट करू साइलेंट रही जाउची तो एटा डायरेक्टली फ्रॉड हबो ना नहीं बुझला ना नहीं तो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस माने चेंज इन सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू changed terms and conditions of the contract leading to changed terms and conditions of the contract and the other party कौन मु लिखि दउची एडी तळे पूरा एक्सप्लेनेशन डा having knowledge of the entire scenario fails to communicate the matter or remain silent तो मु लागियो एते जिंस कोन पे लिखियारो बट सेतळु तो मु सांगे सांगे से जिंसडा मन पडियो सो इट्स वेरी एसेंशियल टू राइट हैला एटा कोन हबो हमरो डायरेक्टली अमाउंट्स टू क्लियर ऑब्वियसली गुटे कंडीशन हम जो प्री कंडीशन टा कुआ आइथिला से कहला कोन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट
active concealment of the fact, having knowledge or belief of the fact ହେଲା जानी कि से जदी क्या माने conceal करछि किबा hide करछि तो से condition रे match हैला ना नहीं circumstances change हैला entire scenario change हैला but जणो को जणा अछि आ जणो जणा नहीं जानी कि जदी से silent रहै अछि तो silence will amount to fraud in this situation. Second thing कौन से कहछि even when a person is not bound to disclose a fact, he may be held guilty of fraud if he volunteers to disclose the state of the fact partly. This is so when the undisclosed part renders the disclosed part false. माने देखो से कहछि कोन गोटे एमती स्टेटमेंट अछि जोडा रे कि अधा जिंस रिवील हे जेछि अधा जिंस रिवील हेन हैला जदी ए जिंस पूरा पूरी डिपेंडेंट अछि ए जिंस ऊपर हैला माने ए जिंस रो स्टेटमेंट जहां भी अछि पूरा पूरी डिपेंड हे गे अछि द डिस्क्लोज्ड फैक्ट ऊपर तो जदि ए जिंस पई से साइलेंट रही जाउची तो एडार कंफर्मेशन से मानो को मिलनी कोर्ट को मिलनी तो अल्टीमेटली कोन हला पूरा जिंस रो किछि भी कंफर्मेशन मिलनी तो कोर्ट रागिबो ना नहीं ऑब्वियसली रागिबो काहेकि ताको कंफर्मेशन दरकार थिला बिकॉज़ पार्शियली गुटे फैक्ट डिस्क्लोज हिची आउट पार्ट कोन अछि डिस्क्लोज हेनी अनडिस्क्लोज रही जेची जेतो आउट पार्ट अनडिस्क्लोज रही जेची तो कोन हला ए जहां भी जिंस अछि दीडा जगह जिंस कोन इंटरडिपेंडेंट हे जेची तो जेतु इंटरडिपेंडेंट हे जेची तो हम टोटल जिंसडा को साइलेंट कंसीडर करी एंड टोटल जिंसडा को फ्रॉड कंसीडर करिबो क्लियर. Even when a person is not bound to disclose a fact, he may be held guilty of the fraud if he volunteers to disclose the state of fact partially. हैला जदि से अधा सतन कहि रहि जाउची देन आल्सो कोर्ट राइबो हैला तो एडी कोन कोन कहिछि सी हाफ ट्रुथ रे दीडा जिंस कहिछि गुटे होछि partial revealing of fact एडा भी फ्रॉड हबो amounts to fraud. पूरा से प्रोविजन टा हम ब्रेक करके पढुछु ताकि गुटे भी जिंस भूल हबनी एबे खाली तब पार्ट रहिला कोन जिंसटा बुझिबार मन रखिबार क्लियर. partially revealing of the fact will amount to fraud. आउडे होची undisclosing the portion of fact which is dependent on the disclosed part of the fact. ए स्टेटमेंट बुझी पालो तो दीडा पूरा गोटे स्टेटमेंट अछि सेतरे जदि हमें स्टेटमेंट को दीडा पार्ट करूछु तो अधा पार्ट जतनो डिस्क्लोज हे जेछ इवन इफ इट्स डिस्क्लोज्ड द अनडिस्क्लोज्ड पार्ट जहां भी अछि से जिंसडा जानिला आगे हमें पूराटा सतना नै जानि पारिबो जेते हमें पूराटा सतना नै जानि पारनु तो ए जिंसर इंपोर्टेंस रहिला कोन पे ए जिंसर माने सतरा जानिबो so that's why कोन undisclosed part जानिबाडा दरकार एडी disclosed part सतना नै जानिया पाए तो से कहछि कोन undisclosed part रे जदि से साइलेंट रहि जाउची this will amount to fraud. सुनिबा पे कॉम्प्लिकेटेड लागे बट इट्स वेरी सिंपल क्लियर. ए जो तुम्हारा पूरा भीतर पॉइंट जे ना कि एडा रो आगा तुम्हारा केस लॉ क्वेश्चन आसे क्लियर. देखो एग्जांपल्स. A sells by auction to be a horse which A knows to be unsound. A says nothing to be about the horse unsoundness. This is not fraud in A. A sells by auction to be a horse which A knows to be unsound. A जानिछि सेटा unsound अले. A says nothing to be about the horse's unsoundness. This is not fraud in A. Fraud ना एडा को नाइ काहेंगे नाइ किए कोइ पर जाड़ बुझिला. ऑक्शन रे सेल हला फर्स्ट थिंग होची ऑक्शन रे सेल हला ऑक्शन रे जेतळो को सेल होची माने नॉर्मली आमे एडा ये रे पडिबा इंडेमनिटी गारंटी तापरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट रे केति जिंस आसीबो ऑक्शन सेल रे केति की कंडीशन थाउची प्री कंडीशंस थाउची कोन हमरो ना आमे पूरा पूरी डिस्क्लोज करिया दरकार नै जे तो ऑक्शन सेल माने कोन गुटे हाफ रेट रे हमको मिलु चली कया कथा सो देयर आर पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि आमे न कहिले बे चलेबो कि इमति किछि थाए हला. देखो ए सब एग्जांपल उडा तम पे होमवर्क रहिला हला निजे निजे पढिबो खाली जिंसडा कोन ए भितरु जहा भी मन रखि दबो. देन देखो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड. According to section 19 when consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. हला जे भी जार भी consent जदी fraud misrepresentation coercion लागि होउची हला तो कोन से voidable करि पारि. A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in a position in which he would have been if the representation made had been true. एटा देखो एते बड़ स्टेटमेंट से कहछि गुटागा जिंस
से कहूँ जदि पार्टी ए अच्छी पार्टी बी अच्छी है ये हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट पार्टी एंड पार्टी बी गोटे जन को आपको ये कौन अनड्यू इन्फ्लुएंस अनड्यू इन्फ्लुएंस आपको कौन बुझेगी इंड्यूस करके से पार्टी कॉन्ट्रैक्ट भितर को आनी दीछ हेले ए रो जहाँ भी बी रो जहाँ भी रोल अच्छे सेटा दी प्रकार हो पारियो से डायरेक्टली से जिनसटा कौन करियो वॉइडेबल करि परिबो नले से कौन करियो ताको बुझे पारियो एक्सप्लेन कौन बुझेबो ना से कहयो कि जदी से कॉन्ट्रैक्टटा नॉर्मली हेई थांदा माने से कॉन्ट्रैक्ट भितर जदी मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस किछि भी नथिले केमिति हेई थांदा सेमिति आमे कोन रेक्टिफाई करिकि करि परिबा से बुझे पारिबो माने जदी से चाहुनी से कॉन्ट्रैक्टटा कैंसिल हो से तो कोन से बुझेबो कि नाही तू जहा करलु ठीक अछि एबडू किछि भूल करिबानी जदी ए जिंसडा न हेई थांदा सेतळो कॉन्ट्रैक्टटा जिमिति कैरी आउट होई थांदा सिमति आगा आमे कैरी आउट करि से कय देखो a party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation माने B may if he thinks fit हला ताको जदी ठीक लागिला insist माने कोन explain किंबा state insist that the contract shall be performed and that he shall be put in a position हला contract perform हो explain that contract shall be performed आउ कोन plus कोन गयो ना he shall be put in a position in a normal position लिखि दियो normal position if the contract was ordinarily carried out बस simple statement लिखि दियो if the contract was ordinarily carried out हैला जदि कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनरीली कैरी आउट होची तो केमिति हेई थांदा से जिंसडा को धरी कोन से इंसिस्ट करि परिबो माने जदि ताकू लागी ना ए लोकडा फ्रॉडुलेंट लोकडा मते आसे तो किछि काम करियार नै फ्यूचर रे तो ही कैन डायरेक्टली मेक इट वॉइडेबल बट जदि से चाहुची कोन नै जिंसडा जेमति आसे सेमति चालू हला मो खाली कोन करी तो कॉन्ट्रैक्ट जेमति परफॉर्म होची हो तापर से ताको इंसिस्ट करियो कोन जदि ए कॉन्ट्रैक्ट भितरु किछि भी माने लाइक इलीगल फैक्टर्स न थांदा तो जेमति कॉन्ट्रैक्ट चाली थांदा सेमति चालू clear however there is one exception to the rule of voidability of the contract at the option of the agreed party if such consent was caused by misrepresentation or silence or fraudulent within the meaning of section 17 the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the fact with ordinary diligence a pura paragraph ta ko important mark hala से कहूची कौन ए जिनस को हैला ए आ बी जे भी अछंदी ए आ बी जे भी अछंदी से जिनस रे कौन गोटे फैक्टर से अलगा कहूची कौन कहूची जदी ए ताको अनड्यू इन्फ्लुएंस किबा फ्रॉडुलेंट मैनर रे ताको बुझे देछ ठीक अछि ये मूर्ख थी लगी कौन पे ता कथा सुन लगी ये इंक्वायरी करि परथांदा माने बुझिला ना से कौन कहूची he whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence माने ते ordinary ये रे माने normally he could have discovered or identified the facts with inquiry हला इंक्वायरी करी कि जदी से नॉर्मली भी डिस्कवर करि परथांदा आइडेंटिफाई करि परथांदा बट से करिलानी ता कथा खाली सुनी पळेला तो देखो ता भी भूल अछि तो कोर्ट कोन कहूची हमको देयर इज वन एक्सेप्शन हला वॉइडेबिलिटी हे पारिबनी गुटे एक्सेप्शनल केस अछि जेबे कि एग्रीड पार्टी माने जाकू फ्रॉडुलेंट मैनर रे बुझाई हेछि से जदी किछि इंक्वायरी न करी कि डायरेक्टली ता कथा सुनी कि पळेला तो कोन ता जे तो भूल अछि तो ए ऑप्शन को एक्सेप्शन से देछि बुझिला आई होप इट्स क्लियर सिंपल जिनसडा खाली से लास्ट स्टेटमेंट टिक अंडरलाइन करियो सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉड हैला फ्रॉड रो मु खाली ए इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड रो चार्टटा करिनी लिखि दियो इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड भितरे कोन कोन कहिचे सिए दीडा जिंस मु एडे लिखिची voidable at the option of aggrieved party माने कौन रे वेरी गुड सफरिंग पार्टी हैला अग्रीड पार्टी नाले कौन कर परियो
the हाँ insist करी पारियो obviously the agreed party if he thinks fit हैला बाउंड नहीं if he thinks fit जदि ताको ठीक लागिला कौन कर पारियो दीडा जिंस ब्रेक करिकी पड़ियो पूरा प्रोविजन जतलो ब्रेक करिकी पड़ियो गुटे भी पॉइंट मिस हबनी काहेकि तमे जतलो गुटे पॉइंट लिखुचो केस लॉ पॉइंटा मो पढ़ाई से हटके टॉपिक कहूची जतलो गुटे केस लॉ क्वेश्चन ना आंसर करचो सेथरे कोन हमको मेन जिंस रहउची ना तमरो से क्वेश्चन टा को आंसर तुम डायरेक्टली जान बट द रिप्रेजेंटेशन पार्ट रे तमरो मार्क जहां भी रहउची हैला तो जतलो तमे लिखुचो से प्रोविजन टा पूरा लिखिया पे बाध्य बहुत पिला एटा जाने ना तांके कोन भाबुचंदी कि स्टेटमेंट को जेतिकी दरकार प्रोविजन रो सेतिकी पार्ट लिखले हबले नै पूरा प्रोविजन टा लिखियार अछि ता भितर से स्टेटमेंट टा एक्सप्लेन करियार अछि सो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट मन रखियो हैला द एग्रीड पार्टी इफ दे थिंक्स फिट कोन हबो insist contract to be performed insist contract to be performed plus कोन he shall be placed in a position if the contract was ordinarily carried out clear तीन थरे पढलु तीन थर हमरा एडी पॉइंट रिवीजन हे वाला तो वंस लास्ट जदि तमे लिखिए से तळो सेडा कोन रजिस्टर हेगी रहउची जेतो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत लेंदी चैप्टर टा तो से भितरु तम कोन फर्स्ट टाइम रीडिंग रे तुमको सब जिंस डिटेलली जानियार अछि सेकंड टाइम रीडिंग रे एक्सेप्शनल केस उडा को भल से पढिबार अछि थर्ड टाइम रीडिंग रे खाली एग्जाम ओरिएंटेड जिंस पढियार अछि बट 3 टाइम्स रीडिंग इज अ मस्ट क्लियर एक्सेप्शन कोन थिला इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड रो एक्सेप्शन ला इंपोर्टेंट पॉइंट कहितली मु एक्सेप्शन कोन थिला एबे जो पढलो हमें the rule of voidability at the option of the aggrieved party. His consent was so caused by misrepresentation, silence, or fraudulent within the meaning of section 17. The contract, nevertheless, is not voidable. Hala, se kaun kochi? The contract is not voidable. Not voidable. कौन पे लॉ लैंग्वेज तो देखो से केमती कहिछि if the party whose consent was so caused माने aggrieved party had the means of discovering माने कौन he had the power to discover the facts ता पाखरे चांस थिला इंक्वायरी करिबा पे he was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence is not voidable if the aggrieved party had the option or means to discover the facts of the subsequent case with ordinary diligence and normal course of inquiry same लिखिनो हमें same but different बुझिला तो जिंस होची कोन हमरो हमें लॉ लैंग्वेज सेडी मेंशन करियार अछि बट इट शुड बी डिफरेंट हमें टोटली टेक्स्ट बुक को कॉपी करि परियन दिस हैज टू बी सम वे एक्सप्लेनेटरी बुझिला ना तो से कोन कोस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द अग्रीड पार्टी हैड द ऑप्शन और मींस माने ता पाखरे ऑप्शन थिला टू डिस्कवर कोन टू इंक्वायर और डिस्कवर द कोन डिस्कवर करियो ना facts of what subsequent case रो facts केमिति ना वर्तमान दिन पे केमिति लास्ट 10 इयर्स रो से करि परियन माने मनरो से गुटे जिंसडा बिकी देला हैला बिकी देले ये पूरा उल्लाळ्या किन देला हैला गुटे स्टोन दा थिला से किनि देला कहला कि एडा बहुत मैजिकल स्टोन हैला मैजिकल स्टोन कहि से बिकी देला 10000 रुपीस से ये किनि देला किनिला पर ये करछि सेडा नॉर्मल स्टोन दा देई मते मैजिकल स्टोन कहला आली कहि तो ये इंक्वायरी करि परथांदा तो इंक्वायरी जतो करूछि से प्रेजेंट डे सिचुएशन को धरि करियर अछि कोन एमती सतरे अवेलेबल अछि कि एबे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एमती अछि कि ना से पर्सन रो सेती कैपेबिलिटी अछि कि ना गुडविल अछि कि ना कोन से सब जिंस इंक्वायर करियर अछि से पास्ट 10 इयर्स रो डाटा कलेक्ट करी केबे सेमती करि परिबो हैला तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डिलिजेंस एंड नॉर्मल केस अली कहले सेडा बुझिला
So this is all about fraud. आमे in detail पढ़छु गुटे गुटे जिंस 2-3 times revise करछु. Fine. एबे देखो मिसरिप्रेजेंटेशन. मिसरिप्रेजेंटेशन माने कोन? से वर्ड रो आगे तुम बुझी जाई पारियो. मिसरिप्रेजेंटेशन माने कोन? रिप्रेजेंटेशन माने ठीक जिंसडा बुझेबार. मिसरिप्रेजेंटेशन मिसअंडरस्टैंडिंग माने कोन? जिंसडा को भूल बुझीबार. मिसरिप्रेजेंटेशन माने जिंसडा को भूल भाबे रिप्रेजेंट करिबार किबा भूल भाबे देखेबार. क्लियर? हां. A statement of fact which one party makes in the course of negotiation with a view to induce the other party to enter into a contract is known as misrepresentation. से कौन कोची ना misrepresentation माने कोची breaking the word misrepresentation से कौन कोची misrepresentation भी गुटे statement of what fact जोड़ा normal course of discussion किंबा negotiation हैला माने कथाबार्ता रे जतलो कॉन्ट्रैक्ट होउची कॉन्ट्रैक्ट ही जेनी कॉन्ट्रैक्ट जतलो होउची कथाबार्ता रे से कोन करची नेगोशिएट किंबा डिस्कस करची हैला डिस्कशन और नेगोशिएशन विथ अ व्यू with an intention मो सिंपलर वर्ड्स लिखु जे यदि with an intention to cheat the other party हैला other party जे भी अछि ताको चीट करिया पई to enter into a contract हैला केतरा वर्ड्स हला आईडिया हमरो केतरा आई मीन फ्रेजेस केतरा हला हमरो फोर थिंग्स फर्स्ट थिंग होची मिसरिप्रेजेंटेशन भी गोटे नॉर्मल फैक्ट वाला स्टेटमेंट बहुत आराम से कहि दबो से जिंसडा आमे जानि परियानी तो एडा केतळो हबो ना नॉर्मल कोर्स ऑफ डिस्कशन किबा नॉर्मली जेतळो नेगोशिएशन दा चलची सेतळो को हबो केतळो ना अल्टीमेट तार पर्पस कोन एडा होची तार पर्पस एडा होची कोन तार पर्पस कोन कोची विथ एन इंटेंशन टू चीट द अदर पार्टी को किमती चीट करके इंड्यूस कर देबा से जिंस को आनिया पई बुझिला जेमिति कि गोटे इन्वेस्टमेंट स्कीम अछि हैला से गोटे चीटर टा इन्वेस्टमेंट स्कीम अछि लोकर पैसा उठियार अछि तो कोन से फैक्ट्स देखबो कि हमरो इंदी विश्वस्त कंपनी हैला जति कि लोक अछन्ने सबो कोन बहुत बड़ बड़ बिजनेस करचंदी हैला जो बिजनेस बहुत किछि टर्नओवर दबो तुमको इमति थिबो तारे आरबीआई इन्वॉल्व अछि सीबीआई इन्वॉल्व अछि से जहा किछि भी कहि परला फैक्ट्स गुडा को से एमिति देखिबो जेमिति कि अदर पर्सन को से पूरी इंड्यूस कर देबो पूरी कन्विंस कर देबो से फैक्ट विश्वास करिया पे करला परे कोन करियो से लोक को ऑटोमेटिकली चीट कर देबो चीट करला परे तार अल्टीमेट पर्पस कोन कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर करबो क्लियर एडा होचे हमन कोन मिस रिप्रेजेंटेशन इट मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट व्हिच इज मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट हला अच्छा ए जो जिंसडा अछि हला इंटेंशन टू चीट जहा भी अछि एडा मटेरियल फैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट हेबार अछि माने से पूरा जिंसडा को धरी कोन डाबा मारी परियो मटेरियल फैक्ट माने पूरा से एक्सप्लेन करला से इन्वेस्टमेंट स्कीम हिसाब रे से गुटे जिंस कहै कोन तुम 1000 रुपीस इन्वेस्ट करो मो 2 इयर्स पर तुमको 1 ईयर पर 1 लाख देबे हला 1000 दियो 1 लाख देबे कि 10 लाख देबे तो अल्टीमेटली से जहां भी फैक्ट्स कहूची से 1000 टा 1 लाख भीतर किमिति कन्वर्ट होबो से जिंस को धरी से मिच्छो कथा जा कहथो माने पूरा कॉन्ट्रैक्ट नै पूरा मटेरियल फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को धरी कि से मिच्छो कथा जा कहथो क्लियर It may be expressed by words spoken, written or implied from the acts and conducts of the party. ए जो misrepresentation दा जो अच्छी हमरो हला एडा किमती हे परियो either words spoken words or written or implied हला जहा किछि भी से कथा अर्थ रे कहि परियो गोटे वीडियो प्रेजेंटेशन देई कहि परियो नाले कोन लेखि की गोटे कोन फेक गोटे जहां भी पैम्पलेट वगैरह बांटी की भी कहि पारे क्लियर A representation when wrongly made either innocently or unintentionally is a misrepresentation. When it is made innocently or unintentionally it is misrepresentation and when made intentionally willfully it is fraud. हला एडा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस क्लियर आमे कहया कि से लोक जानिनी ताकू के उडा ऐसी कहि दिछि से तमो कहि दिछि से इंटेंशनली करनी हला से इनोसेंटली कर दिछि हेले एडा हबो कोन मिसरिप्रेजेंटेशन जदि से जानि जानि कहि था ना एडा कोन हबो फ्रॉड हबो clear this is the clear cut difference between misrepresentation and fraud misrepresentation has been defined in section number 18 hela then se kochi kono jinso kon the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it
of that which is not true though he believes it to be true माने से कहूची कोन पॉजिटिवली से जिंसो से लोक रिसीव करला माने जे भी जदि हमको जिंसो से कहूची तो ताकू गुटे प्रूफ से मागी थांदा ना कि एडा सत ना नहीं से जानि कि कहि थांदा देन सेटा ठीक हेई थांदा से किछि भी न जानि कि से जहां भी सुनला हम आसी कहि देला स्टिल इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन क्लियर any breach of the duty without any intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him माने से कोच कोन breach of duty तार intent to deceive नै माने गुटे पर्सन रो intention अछि deceive करिया हैला तार ये कोन तार गुटे एजेंट किबा जे भी क्लेम माने क्लेम करे वाला लोक अछि तो से कोन कहला ए लोक जे तो अधिक पावर रे अछि तो ही ब्लाइंडली बिलीव व्हाटएवर ही से अल्टीमेटली चारटा जा जिंसो गुट्टा जिंसो बुझेबो कि तू जानि की करे न जानि की करे जानि की करछु सेडा फ्रॉड न जानि करछु मिसरिप्रेजेंटेशन हैला causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement हैला से कोन कहूची जदि इनोसेंटली ताको एग्रीमेंट भितर को आनी दोची मिस्टेक गुडा करोची सब जिंसो कोन हबो फ्रॉड आगा आई मीन मिसरिप्रेजेंटेशन आगा हबो क्लियर मु कहितली तीनटा पॉइंट एउडा सेते कि से पॉजिटिव एसर्शन पार्टटा एते खास नै जिंसो कोन तमरो ए जो जिंसोडा अछि सेडा बेसी इंपोर्टेंट एंड जो इंटेंशन टू चीट ता अछि सेडा सब बळे मटेरियल फैक्ट को धरि कि हबो से जिंसोडा होजि तमरो इंपोर्टेंट अगेन से दीरा जिंसो कोजि टू टाइप्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन आर नोटिस्ड गोटे होजि अनवारंटेड स्टेटमेंट्स एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी अनवारंटेड स्टेटमेंट्स एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्लियर When a person positively asserts or makes an absolute and explicit statement of facts, that fact is true. Though he has no reliable source to form the opinion, he believes it to be true. This is one type of misrepresentation. First type of misrepresentation रे से कौन कहूची से कहूची गुटे person positively की absolute explicit statement दे दोची माने से सुनी देला से लोकडो से पूरा confidence सहित कहि दोची से कॉन्फिडेंस टा बैकअप करिया पई से गुड थरा हेले से कोन इंक्वायरी करलानी गुड थरा हेले से प्रूफ मागिलानी सो से जिंसडा कोन कहया अनवारंटेड स्टेटमेंट्स माने अनवारंटेड माने कोन ना से स्टेटमेंट को किछि ठीक ठिकाना नै वारंटी किछि नै हला सेकंड थिंग होची ब्रीच ऑफ ड्यूटी एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी व्हिच ब्रिंग्स एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट बाय मिसलीडिंग द अदर टू हिज प्रेजुडिस इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन से कोन कहूची ब्रीच ऑफ ड्यूटी भांगिबा ड्यूटी भांगिबा ड्यूटी इमति कैरी आउट करिया व्हिच ब्रिंग्स एडवांटेज द पर्सन कमिटिंग इट हैला से जो पर्सन अछि जे भी से बुझौछि ताकू जदी किछि एडवांटेज होछि से जिंस हैला सेमति ड्यूटी कैरी आउट करला जेमति कि कोन जे भी बुझौछि जे भी कमिट करछि ताकू किछि एडवांटेज हैला बाय मिसलीडिंग द अदर टू हिज प्रेजुडिस अदर पर्सन को मिसलीड करिके अदर पर्सन को डाइवर्ट करिके मिछ कथा कहिके जदी आकू किछि पर्सनल बेनिफिट होछि डायरेक्टली देन इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन बुझिला एडा फ्रॉड भी हे पारे बट काहे की हेलानी ना एडी कोन ड्यूटी रहउछ ड्यूटीटा मझरे रहउछ माने आकू किए गुडे सिखौची हैला ये डायरेक्टली कहउची आ आकू किछि बेनिफिट होउची केमिति बेनिफिट होउची ना जेतु ये तांको मिछ कथा कहउची आडू माने आकू जे कहिथियो आकू टिके कमिशन वगैरह जहां भी दोथिबो तो इनडायरेक्टली होउची हैला जद से डायरेक्टली कहिथांदा डायरेक्टली पैसा पाई थांदा तो एडा कोन हे थांदा फ्रॉड हे थांदा बट ब्रीच ऑफ ड्यूटी वर्ड ता जेतु आसुची एडी हमर कोन एडा होउची हमर मिसरिप्रेजेंटेशन क्लियर I hope it's clear. Effect of misrepresentation देखो as per section 19 when the consent to an agreement is caused by misrepresentation the agreement is a contract voidable at the option of the party again से गुटे जिंस चाहिले कोन से जानू जानू कोन void करि पारिबो whose consent was so caused a party to a contract whose consent was so caused by misrepresentation may he think fit insist that the contract shall be performed and that he shall be put in a position in which he would have been if the representation made had been true same to same fraud वाले अच्छे एडा हला effect of misrepresentation and fraud are almost similar काई कोड लिखिथिला effect of fraud and misrepresentation तमे अलग करी कि लिखिबो हला कंफ्यूज हबरी जेतो exception देखो if such consent was caused by misrepresentation or silence or fraudulent within the meaning of section 17 the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence एडा exception भी same much हैला exception of fraud and misrepresentation clear एग्जांपल उडा नीचे देखिबो
बिकॉज सेम जिन गुड़ा से एक्सप्लेनेटरी मैनर में बुझेबो एंड एगुड़ा डायरेक्टली तुम केस लॉ आसी पारे है A fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable. Obviously, fraud or misrepresentation na एमिति अछि जेंति कि से अदर पार्टी किछि हार मंगा हेलानी किछि फरक पड़लानी अगेन एडा कोन जानचो ना माने immaterial facts माने सान सान जिनस गुड़ाक देख इमिति जिनस देख से जदि कहूथिला कि से कैश रे दबो होउथिला से कोन कहला नाइ मु कैश रे दे पारिनी चेक रे टिके टिके करिकि देबी एते मास पर देबी बट देई देला तो अल्टीमेटली से पूरा जिनस रो किछि इफेक्ट पकेलानी से जिनस जदि मनर से कहला कि तुमको एसएमएस थ्रू रे से जणे थांदा से जिनसला से जणेलानी तो बहुत अनक्रूशियल जिनस गुडा को धरि कि जदि से मिसरिप्रेजेंटेशन हे जोची तो ए जिनसटा वॉइडेबल नाही हला अल्टीमेटली गुटे पॉइंट तबे लिखि पारिबो fraud, please write down fraud or misrepresentation with respect to fraud or misrepresentation with respect to material facts हेले कौन हबो ना it's voidable but immaterial facts माने बुझुछ तो unimportant facts हैला unimportant facts हेले कौन हबो एडा not voidable जदि किछि फरक आला पड़नी को कॉन्ट्रैक्ट को तो से जिंस किछि इफेक्ट पके पारिबो देखो मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड आर ऑलमोस्ट सिमिलर पूरा पूरी जे तो फ्रॉड भल से बुझ जाई तो मिसरिप्रेजेंटेशन गुड थरे बुझा पड़ियाला एबे हमें देखिया मिस्टेक जोडा कि बहुत बड़ पार्ट था बट वेरी इजी पार्ट काहे कि बेसी किछि क्वेश्चन आसे नै सेथरु सिलेक्टेड क्वेश्चंस आगा थेबो फाइन देखो mistake means an erroneous belief about something माने कौन wrong belief very good wrong belief about something it has not been defined in Indian Contract Act mark it important को गुटे एमिति येडा जोडा कि कोन डिफाइन हिनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भितरे मिस्टेक टा डिफाइन हिनी हैला मिस्टेक कैन बी ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट आम एडी अछि देखो गोटे चार्ट से काटी के देथिबो देनी फाइन हमें बनेना आम कौन चार्ट बने आसछि तो आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट ठीक है मिस्टेक कैन बी कौन मिस्टेक ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ द्वारा भी किछि मिस्टेक्स हो जाए मिस्टेक ऑफ फैक्ट जदि फैक्ट्स रे किछि मिस्टेक हो जाए माने फैक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक ऑफ द फैक्ट राइट मिस्टेक ऑफ द लॉ भितरे कोन आछि मिस्टेक ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री और फॉरेन कंट्री दीडा आगा हमर लॉ ही पारियो मिस्टेक ऑफ द कंट्री mistake of the foreign country clear mistake of the fact भितरे कोन अछि bilateral and unilateral mistake unilateral mistake clear एटी देखो बायलैटरल मिस्टेक जा भी अछि ता अंडर केतरा जिंस अछि देखो जेते बड़ हेइथिबो सेते सिंपल जिंस हेइथिबो जेते सानो हेइथिबो सेते कॉम्प्लिकेटेड होबो भांगी बाड बुझिला बायलैटरल अंडर कोन कोन आछि हमरा देखो मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर एंड मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैला देखो मिस्टेक as to the subject matter mistake as to the
possibility of performance of the contract. Clear? এটা রইল আমরা first classification. Mistake of law, mistake of fact. Mistake of law under it we have two things, mistake of the country and mistake of the foreign country. Mistake of fact under it we have two things, bilateral mistake and unilateral mistake. Clear? Mistake মানে হচ্ছে কোন আমরা erroneous belief. Erroneous belief. And it is not defined. মানে important point गुड़ाक we are jotting it down under some heading. Not defined under the Indian Contract Act. Clear? मन रही जिबो तो पचारि पारियो because पूरा exception हे गया अछि गुटे एमती वर्ड जो विषय कि Indian Contract Act रे define हेनी but we are discussing it in detail सबुठो अधिक कथा होछ जेमती कि भोजी के न डाकिया लोक आसले बेसी खाए बुझिला भोजी डाकिया लोक इंदी एते इंदी हेबेनी जे आस माने न डाकिया आसीबो से खाली उत्पत्त होत सिमती मिस्टेक भी हमरो हला देखो mistake of the law of country. When a party enters into a contract without the knowledge of law in the contract is affected by such mistake but it is not void. देखो without the knowledge of the law in the country माने country भितरे कौन existing law गुड़ा गछि rules and regulations. law माने कौन rules and regulations माने से ठीक भाबरे किछि जानिनी हेला नॉर्मली इन कंट्राक्ट भितर एंटर हे जेची ठीक भाबरे लॉ जानिनी रूल्स एंड रेगुलेशन उडा जानिनी तो कोन हबो ऑब्वियसली मिस्टेक हबो हेला द कंट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय सच मिस्टेक बट इट इज नॉट void मन रखो एटा void नाही a contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India. The reason here is that ignorance of law is not an excuse at all. However, if a party is induced to enter into a contract by mistake of law, then such contract may be avoided. The mistake of the law of the country भितर कौन आछि मीनिंग आछि फर्स्ट लिखि दियो contract entered without what clear knowledge about the existing rules and regulations mistake of law is not void. Mistake of law is not void, but it is avoidable. But it is what avoidable. बुझिला void नहीं but जदि induce करा हे जोची then it's quite avoidable. बुझि पालो देखो such a mistake माने mistake of the law of foreign country mistake of fact and agreement in such case is treated as void. Directly गुटा जिंस कहूची हला आमे गुटे चार्ट रो बुझा पडियाला कोन आम कंट्री भितरे अछि हला आम घर भितरे जते भी मिस्टेक करछु ठीक अछि किछ असुविधा नै वी आर नॉट पनिशिंग बट का घर को जीवो हॉस्टल जीवो इंस्टीट्यूशन जीवो कॉलेज जीवो सेडे कोन मिस्टेक करले यू आर पनिशेबल बुझला तो सेमिति आगा सेम वे हमर फॉरेन कंट्री भितरे जहा किछ भी जदी मिस्टेक हे जोची से कंट्री रो रूल्स एंड रेगुलेशंस आमे जदी जाननु किछ मिस्टेक कर दोजो तो कंप्लीटली वॉइड हबो कंप्लीटली कोन अगेंस्ट हबो लिखि दियो contract entered without understanding दीडा जिंस आसीडे अंडरस्टैंडिंग भितरे रूल्स ऑफ फॉरेन कंट्री ना रूल्स ऑफ फॉरेन कंट्री एंड consequences माने अल्टीमेटली सेडा न करले कोन हबो से जिंस भी जदी तोर अंडरस्टैंडिंग नै कि रूल्स रो अंडरस्टैंडिंग नै consequences ऑफ नॉन कंप्लायंस देखो ए वर्ड जा सब मो जान जानी लिखो छी ताकि कोन तमे स्टेटमेंट रे यूज करि पारिबो हला माने अगेन तमे टाइम देगी लॉ लैंग्वेज पढिबाडा इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल हला संगे संगे पढिबो consequences ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल्स ऑफ foreign country
rules of foreign country and consequence of non compliance of foreign country एटा कौन हबो is void बुझिना is void clear तमे जतलो से मिस्टेक ऑफ द फॉरेन कंट्री आसीबो तो डायरेक्टली void लिखियो ले कहले केस ला मार्क दबनी 7 मार्क्स पे देथियो तमे कोन लिखियो बुझी पारियोनी तो ए स्टेटमेंट सेडे लिखियो mistake of the foreign country comes under the sub classification of mistake of law. Mistake of law is nothing but the contract which is entered into without the clear understanding of the rules, regulations, provisions and subsections of the country. So jodi se country amro domestic country then it's avoidable and not void, but if it is of the foreign country then it's totally void. बुझला एमती करिके लिखि देखो देन मिस्टेक ऑफ द फैक्ट मे बी बायलैटरल एंड यूनिलैटरल तमे निजे निजे जानि देउथियो बायलैटरल माने कोन दीडा ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट थबो यूनिलैटरल माने गोटे तो हमें फर्स्ट देखिबा यूनिलैटरल कोन यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू फैक्ट माने कोन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to the matter of fact. A unilateral mistake is not allowed as a defense in avoiding a contract unless brought about by another party's fraud or misrepresentation. माने से कहूची कोन जदी गोटे पार्टी लागि किछि भूल हे जेछि जेडा ऑब्वियसली इमटेरियल हेथिबो मटेरियल हेथिले तो सेडा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर रे पड़े थाना हैला मिस्टेक हे जेछि किछि भूल हे जेछि तो से जिनसडा को कोन हे पारिबो ना नॉट voidable एते भी माने सिवियरली voidable नाही तो एडी लेखा देखो से कोन कहछि वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट माने जिनसो कोन कॉन्ट्रैक्ट भितरे जहां भी एक्जिस्टिंग फैक्ट गुडा अछि ना से फैक्ट गुडा धरि किछि मिस्टेक हे जेछि मे बी सेडा बुझिबारे हे पारिबो मे बी सेडा कोन रिप्रेजेंटेशन रे हे पारिबो मे बी कोन ताको अधा जिनसो कन्वे हेछि मे बी कंफ्यूजन रहि जेछि तो ए जिनसो गुडा पे हमें अवॉइड करि परिबनी ताको धीरे करिके बुझेबा हैला a unilateral mistake is not allowed as a defense in avoiding a contract हैला से कहउछि कोन कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंड करिया पे माने कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करिया पे तुम यूज करि परियनी unless brought by another party's fraud or misrepresentation. जदि से जो जिनस कहउछि माने कोन कहउछि गुटे पर्सन अछि से फ्रॉड की मिसरिप्रेजेंट कर दिछि फैक्ट गुडा को ताको धरि के ये भूल बुझिछि बुझिला ना से भूल बुझौछि ये भूल बुझिछि तो दी आडर जतो भूल अछि unless and until fraud or misrepresentation रो इन्वॉल्वमेंट अछि we can't use it as a defense or we can't make it void. Clear? Unilateral mistake कोन होछि लेखम when one of the parties to contract have few confusions or dilemma in understanding particular facts of the contract हैला तार मीनिंग लिखि देली एडा not voidable but if the facts are by drawn conclusions made through fraud or misrepresentation then it is void. Clear? Then it is void. voidable से लगी Thank you. It's voidable. Here bilateral mistake टा देखिबा
हमर पूरा जिंस देखो एति की हमर बाइफरकेशन थिला लागुथिला यार मिस्टेक एते बड़ बट मिस्टेक इज एज सिंपल एज दिस बुझियो बहुत सिंपल या देखो एबे जदि 3-4टा पेज तुम गोटे ग्लांस रे मिल जाउछि सो यू शुड बी समवॉट कंसिडरेट अबाउट काहेंगे आडू तो कम हम एक्सपेक्ट करि परियानी एंड इन द लेटर फेज ऑफ टाइम कहूछि जेतलको तमे फाइनल को जीवो ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट तमे फाइनल को पळे प्रीटी श्योर अबाउट इट तो फाइनल को जेतल जीवो तमे कोन केतटा एक्ट पडिबो जानचो सेबी रो गोटे एक्ट आरबीआई रो गोटे एक्ट आईआरडीए रो गोटे एक्ट इंश्योरेंस सेक्टर रो गोटे एक्ट एंड बैंकिंग रो गोटे एक्ट ठीक अच्छे कंपनी लो तो पूरा पूरा पूरी बहुत किसी अच्छे आउरी हैला एनसीएलटी एनसीएलएटी हैला सब जिंस पड़िबो तो सब जिंस जाने बड़ी बहुत दरकार माने लॉ को एक्चुअली लोक बहुत बोर करि दियंती बट इट्स नॉट सो बोरिंग देखो आराम से पड़िबो सब जिंस इंटरलिंक हेगी थिबो the only solution we have is to enjoy whatever we are studying हैला तरीका भाबियार अछि तुमको गोटे रूम भितर लॉक करा ही जेछि जेते जे तमे आठुडा माने गुटे रूम भितर आठुडा अछि आउडे रूम भितर आठुडा अछि हैला आठुडा पिला सते सांग हबो तांके सब तुमको मार्क देबे कि यार ठीक अछि ए पर्सन इज गुड कहि 8 लोक तुम मार्क देले तमे आउडे रूम भितर जेबा आउडे 8 फ्रेंड्स तुमको आसीबे सीनियर फ्रेंड्स आसीबे से 8 फ्रेंड्स सहित तुम सांग हेई जिवो जेते जल्दी सांग हेई कि से माने तुम अप्रूवल दे देबे यू कैन गो आउट तुम पाखे ऑप्शन नहीं से लोक माने केते भी घटिया लोक हो कि केते भी अगली लोक हो केते भी बोरिंग लोक हो यू हैव टू बी फ्रेंड्स हला तो जेतु ऑप्शन नहीं तो हमें कोन करिया तांग सहित कथा बडा एन्जॉय करिया तांग सहित टाइम स्पेंड करिया एन्जॉय करिया सो दैट इज इंटर एंड फाइनल क्लियर फाइन देखो लास्ट टॉपिक बायलैटरल मिस्टेक when both the parties again मु कहिथिली तमे निजे निजे बुझियैथिलो unilateral means one bilateral means two so when both the parties to an agreement are under mistake as to the matter of fact essential to the agreement and the agreement is void तो से कोन कहछि when the both the parties to an agreement are under mistake दी जण तरफ रु भूल हेई जैछि या mistake as to the fact हला facts of the case को धरी mistake हेई जैछि essential to the agreement को एंटर करिया पे जहा किछि भी essential माने कोन material facts ali कहि परिया simple word is material facts लिखो एडी अच्छा मो जागा तो छाड़ने आओ when both the parties are under mistake as to material facts को धरि कि जदी mistakes अछि material facts को धरी जदी मिस्टेक अछि दी जण तरफ रु तो हमें कोन कह सकू बायलैटरल मिस्टेक कहया हैला बायलैटरल मिस्टेक कहया मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर देखो अच्छा एक्सप्लेनेशन रे से कोन कहै छी an erroneous opinion as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed as mistake as to matter of the fact माने से कोन कहै छी जदी erroneous opinion as to the subject matter of the agreement को धरी कि जदी किछि भूल विश्वास अछि मिथ अछि मिथली कहि परिया मिथ अछि तो एडा में मिस्टेक टू द मैटर ऑफ फैक्ट कहि परिया मैटर ऑफ फैक्ट सेतोल आसीबो जेतोल को मटेरियल फैक्ट्स को धरि कि किछि भी रॉन्ग ओपिनियन अछि देखो भीतर पॉइंट केतोडा आछि हमर हैला हमको फर्स्ट से कहला कोन जदी को जिंस को धरि कि तमरो बिलीफ सिस्टम ठीक नै तो हम सेटा मिस्टेक कहया तापरे कहछि कोन जण को तरफ रु जदी मिस्टेक अछि देन ठीक अछि माफ कर द तापरे कहछि कोन दी जण तरफ रु मिस्टेक अछि तो सेटा पूरा पूरी भूल हैला तापरे कहछि कोन भूल माने कोन टिके सुनो भूल माने भूल नै पूरा भूल नै टिके सुनो कन्विंस हो कोन होछि सी ना जो जिंसडा अछि पूरा कॉन्ट्रैक्ट किबा एग्रीमेंट को पूरा पूरी क्रुशियल हेले आगा जदी ताको धरि कि किछि भूल भाबर माने विश्वास उडा अछि देन ओनली हम सेडा को मिस्टेक कंसीडर करिया तो केति कि से एक्सेप्शन दोछि माने केमिति सरोजनी नगर तमे जदी जिवो हैला तुम फर्स्ट कोन कहया से कहया 1000 रुपीस तमे कहया कोन नाइ 500 को दिया से कहया नाइ हबनी से कहया हो 800 से कहया कोन 800 ना तमे कहया नाइ 500 से कहया नाइ 700 नाइ तमे कहया 500 लास्ट कोन कहया हो लास्ट रेट कहछि 550 तो सेमिति मिस्टेक जहा भी अछि कमे सब प्रोविजन आला हमर कोन मेन प्रोविजन ता एतिया रहयो बट से मेन जिस्टा बुझिया पे हमको पूरा जिंसडा जानबा दरकार काहेकि से फर्स्ट लॉ गुट्टे कोन तरीका गुट्टे एक्ट भीतर को सब जिंस इंक्लूड कर देबो इंक्लूड करिके जण करी एक्सक्लूड करिया जेमिति कि एमकॉम एंट्रेंस एमबीए एंट्रेंस एग्जाम उडा होउची
कौची ना नहीं समस्ते दौचंदी तापरे कोन जण जण एक्सक्लूड करछि ना नहीं को हिसाब रे करछि सी मार्किंग सिस्टम हो कैरियर मार्क्स हो जाको धरि कि से एक्सक्लूड करछि सिमिति भी ल बुझि पालो In order to render an agreement void due to bilateral mistake, the following two conditions must be met. देखो एवडा होची conditions हैला ए conditions सा comply हेले आगा हम सेटा को bilateral mistake कहिबा. Mistake must be mutual. Both the parties must misunderstand each other and should be at cross purpose. हैला से कोची दिजन जा misunderstand हो तापर मु सेटा bilateral mistake count करी. हैला तापर कोची mistake must relate to a matter of fact essential to the agreement. Material fact. बुझौची धीरे हैला लोक रागी पळौचंदे कि यार सब जिंस मिस्टेक कहला अवॉइड हैला से कुछ नहीं नहीं ठीक सुन फर्स्ट थिंग होची जदी दिजण आडर भूल अछि देन ठीक अछि सेकंड कोन होची जदी फैक्ट मटेरियल फैक्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देन ठीक अछि देन से कोची कोन व्हाट इज एसेंशियल फैक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉमिस इन ईच केस माने से कोन होची गुटे कॉन्ट्रैक्ट को आउडे कॉन्ट्रैक्ट को लिंक नहीं का कॉन्ट्रैक्ट में कोडा इंपोर्टेंट ही पारिबो क्लियर देन से कोची कोन द वे ए दिडा कंडीशन सैटिस्फाई हेले आगे सेटा बायलैटरल मिस्टेक कहया तो बायलैटरल मिस्टेक रो कंडीशंस कोन एडी मु हैशटैग करके लिखि दोची हैला तो मैं ऐड कर देबो बायलैटरल कंडीशंस bilateral mistakes preconditions कौन कौन हमर mistake must be कौन बोलला मैं mutual very good mistake must be mutual थापरे the mistake must be about material fact बस माने तमे जानि पारियोनी तमर जेतळ एग्जाम आदरे तमे पढिबो सब जिंस केते सुंदर तम मन रहि जिवो सब जिंस माने ईच एंड एवरी माइन्यूट पॉइंट भी तम मन रहि जिवो एंड दिस इज द ओनली वे जेतु मु पढि आसीची मते लागे कि एग्जाम रो सिस्टम को मैच करिया पई सब जिंस मन रखिया दरकार एंड इट्स 99% इम्पॉसिबल कि सब जिंस तम मन रहयो केबे मन रहयो चार थरे रिवीजन करलो चार थरे रिवीजन रे भी तमे जेतळ पैराग्राफ पढछो फर्स्ट पैराग्राफ सिने तमे माइन्यूट पॉइंट उडा को मन रखि पारिबो सब सेक्शन एमती मन रखि पारियो सब गोटे चैप्टर भी कर देला सब चैप्टर एमती करि पारियो कि सब यूनिट एमती करि पारियो कि नाही जेतळ को ह्यूमन ब्रेन रो टेंडेंसी होची जत्ते कम जिंस हमको दोसिबो सेत्ते आमे मोटिवेटेड हेगी रहिबो माने सैलरी तुमको अधिक दिसथियो हैला तुम पळेबो गोटे दिन महीना पूरा मोटिवेट हेगी रहि तापर कहयो कोन यार तार काम कम सैलरी कम हो पछे काम तो कम करियो पड़छि ना से माइंडसेट हे जिवो काहेकि से पर्टिकुलर टाइम को तमरो ए माइंडसेट ता मैच होतला बट अल्टीमेटली ह्यूमन टेंडेंसी होची कम रो अधिक जेमति हमें डिराइव करि परबे कम रो अधिक डिराइव करि परले आगा से पर्सन मोटिवेट हेगी रहिबो दिस इज द ओनली वे आ गोटे चॉइस नाही जो आउट ऑप्शन नाही तो से जिंस पे लिखिबाडा दरकार एंड सेकंड थिंग होची मु कोन पे बारंबार लिखिया पे कोची ना निजो हैंडराइटिंग रो जतरो तमे देखुचो पढुचो यू विल गेट डबल मोटिवेटेड तमे एटा ट्राई करके देखो जार गोटे पूरा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट रो चार्ट के नेकी पढो आ तमे से चार्ट ता निजे लिखिकी पढो केति की कॉन्फिडेंस आसी मत तमे निजे कहियो हला समस्त जे भी देखुचंदी लेक्चर ना समस्त मते इन्फॉर्म करि परिबे हला कि निजो वर्ड्स रे लेखिया जिंस पढिले केति की मजा लागे एंड आउट जिंस लाइक पीडीएफ भी तो तुम जब एग्जाम क्वेश्चन भी मिल जाओ सेति की मजा लागे हैला ठीक अछि लास्ट टॉपिक जे तो देखि द मिस्टेक मस्ट बी अबाउट मटेरियल फैक्ट्स mistake as to subject matter covers the following mistake as to existence of the subject matter माने कोन if both the parties are at mutual mistake as to existence of the subject matter the agreement is void हैला subject matter भितरे हमर कोन कोन आछि फर्स्ट थिंग कोन आसला existence of subject matter first होची हमर existence तापर कोन कहला से identity then quality then quantity title लास्ट होची प्राइस ना ठीक अछि प्राइस ओके
तो existence से कौन कहूची if both the parties are mutual are at mutual mistake as to existence of the subject matter the agreement is void तो subject matter कौन existence थिले हला void माने से कहूची से जिनसटा अछि ना नै ताकू धरि कि सेमाना पाखरे कंफ्यूजन अछि तो ऑब्वियसली void तमे निजे जाननो से जिनसटा हबो ना नाइ ना छाड़ किछि हेले जाननो माने सेटा ऑब्वियसली void then से कौन कहूची identity of the subject matter माने it usually happens when both the parties have different subject matter of the contract in their mind माने गुटे आमे गुटे जिनस पढथलो free consent रे consensus ad idem same thing in the same sense रहिबार अछि अगेन एडी से पार्ट आछि देखो सब जिनस किनि इंटरलिंक्ड सेम थिंग इन द सेम सेंस से कहूची कोन गुटे पर्सन गुटे घर से कहूची से आउडे घर भाबी देछि गांधीनगर रे घर सेकंड लाइन रे घर ब्लू कलर हाउस टा हैला से एपट रो घर भाबी से एपट रो घर भाबी देन कोन हबो एटा देखिया द एग्रीमेंट इज void डायरेक्टली void आ घर कोई ता घर ये भाबी दे चल से बिकियोगी नाही जुत्तरे बाडे हो हैला तो एटा कोन हबो जे void आइडेंटिटी भी void डायरेक्टली लेके किछि असुविधा नहीं mistake as to the quality of the subject matter if the subject matter is something essentially different for both the parties thought to be the agreement is void subject matter जदि नथिबो क्वालिटी हां क्वालिटी रे थिला गेटा हां क्वालिटी ऑब्वियसली सी जदि दावत बासमती राइस भाबची आ ये पतंजलि बासमती राइस भाबची हला जा पे जोड़ा भलो हला मु प्रेफर करी पतंजलि बट ताकू से पतंजलि इच्छा थी होगी नहीं मु जानची की नहीं से क्वालिटी से हिसाब रे भाबी देथिबो क्वालिटी को डिपेंड करची जे जिंद राम दछि सेडा न मो हिसाब रे से माइंडसेट ता हिसाब रे अलग माइंडसेट तो ऑब्वियसली एडा कोन void क्लियर देन आसे हमरो देखो क्वांटिटी bilateral mistake as to quantity of subject matter would render the agreement to be void एडा भी कोन हमरो क्वांटिटी से गुटे प्रिंटेड फॉर्मेट पठे थिला 100 केजी सेली कइगी वर्षा हैला मझरे हैला से लोक हाथ रे धरि धरि आस्थिला से जीरोडा लिभेज 10 केजी क्वांटिटी डिफरेंस पड़ा आसले दी जण भितरे से 100 केजी कहिसी या 10 केजी पठेछि झगड़ा लागिया ना नै भूल कर पोस्टमैन रो कोन भई से काई इंदी धरि गले ना वर्षर आज्ञा वेट हां टाइटल देखो द एग्रीमेंट इज void ड्यू टू बायलैटरल मिस्टेक एज द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हैला आ तापर प्राइस टे भी से कहछ कोन void से 10 टा गइथियो लिबी 100 टा गइथियो लिबी 10 टा हे जीची हैला तो दीडा जे जिंस कोन हमर void पूरा सिंपल माने गुट्टे भी voidable नाही अल्टीमेटली void हे जेबो काहेकी कोन पे तमे देखि पारछो एडा सब क्रुशियल से कॉन्ट्रैक्ट पे हैला पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस देखो physical impossibility and legal impossibility physical impossibility is void agreement is void अच्छा physical impossibility माने कौन it is identified to be non feasible due to physical factors like time distance height हैला तांकी जो कॉन्ट्रैक्ट उडा करछंदी से कहछंदी कोन मो डेली अमेरिका को बिरयानी करी की पठेबी हे पारिबो की नाही कॉन्ट्रैक्ट तो मु देखिले feasible लागि पारियो हां पठेयो फोटो खाली पठे पारियो डेली अमेरिका बुझिला बने की पठे पारेनी बने की पठेई कहछि हाथ रे पठेई कहछि ना तू खाई पार बोली कहछि फोटो मु पठे आ इमति जिंस जा कहले लॉ एग्री करिबनी सो दिस इज void legal impossibility देखो it provides that something shall be done which as a matter of law cannot be done law agree करनी हैला मोर जे भी गुडे संग अछि से पाकिस्तान रे रहउची मु कहि ताको डेली डेली मु ट्रांजैक्शन करी कि जहा भी पठेबी तो मे भी कंट्री एग्री न करि पारे केति की प्रोविजन गुडा को मोर जहा भी कॉन्ट्रैक्टर मैटर अछि ताको धरि कि कोन एग्री न करि पारंती हैला फिजिकल इंपॉसिबिलिटी लीगल इंपॉसिबिलिटी बोर्ड जानि दछो फिजिकल माने कोन तीनटा जिंस कहिछि टाइम डिस्टेंस हाइट एग्जांपल देछि हैला impossibility रे कोन थिला फिजिकल void हमरो लीगल अच्छा फिजिकल impossibility टा हले देखि दबो लीगल impossibility is ultimately void ठीक अछि so mistake is over एति केगा अछि बस ठीक अछि भूल करी कि हमें किंदी ताली पड़े फाइन ठीक अछि थैंक्स फॉर वाचिंग